Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today's lecture is Twill Weave. Today we are going to learn what is Twill Weave, what are the properties of the fabric which have Twill Weave, and how to construct it, what is its speed size, and what are the different types of the Twill Weaves. Uh, Before starting, will like to revise the previous lectures in which we already learned about the plane weave and its derivatives, which includes bar weave, web weave, and meta basket weave. Twill weave is another basic weave which is well known for its diagonal line formation in the fabric due to its interlacing pattern. You can also see these diagonal lines in the picture, which is used as a background. Secondly, this weave and its derivatives are most commonly used for the ornamental purposes. Twill has a closer setting of yarn due to less interlacements, imparting greater weight and good drape as compared to the plain weave. This means in twill weave the number of interlacements are less as compared to the interlacements in the plain weave and its derivatives, and twill weave fabrics can accommodate more number of ends per inch and picks per inch, which ultimately leads to the good draping and the properties, and they have more weight than the plain weaves. Uh, in simple twill weave, the outward and the upward movement of the interlacing pattern is always one that imparts a diagonal line to this design. When in the next slide we are going to learn how to draw the twill weave, we will see what is the outward and what is the upward movement, and how this outward and upward movement allow us to draw the diagonal lines in the fabric. Now there are two different twill directions. First one is the right hand twill or Z twill. In this twill, the diagonal lines run from the lower left corner to the upper right corner of the design, and it will look like something like this. The diagonal lines will run from this is the lower uh, left corner, and they will go towards the upper right corner. And it is called Z twill because these lines are equal to the diagonal line of the Z. Second one is the left-hand twill or S twill, and in this twill, the twill lines run from the lower right corner to the upper left corner like this. We have this. So these run from the lower right corner to the upper left corner. And these are called S twill because of the direction of the S. At this point, I want you to remember two things. Right-hand twill or Z twill is similar to the climbing up the stairs, while left-hand twill or S twill is equal to the coming down to the stairs. Now, the most important part, we are going to learn how to construct the twill weave. First of all, what is the weave repeat and how to determine the weave repeat of the twill design? We already know that weave repeat is the smallest unit that we can identify in a weave design of a fabric, that if we can repeat that smallest number of bar bands in the webbed yarns, so we can get the whole design of the fabric. And we already discussed in our class that it is equal to the motifs of the digital or printing designs. So to get the weave repeat of the twill, what we have to do, we have to do all the interlacing points of the bar top and the web top. For example, say we are going to construct a twill weave of 3 by 1. So bar top is equal to 3 and web top is equal to 1. It will be like we have a bar band and in it we have 4 peaks. 1, 2, 3, 4. So we have 3 ups, 1, 2, 3 ups and 1 down. So this whole sums up to 3 plus 1 and 4. So
but this particular design of 3x1 twill, it will repeat on 4 ends and 4 peaks. Now we are going to draw the okay, अब इस Excel for draft we have to draw arrows. Okay, अब हमने twill weave design draw करनी है in the Z direction. So I am going to write here 3x1 Z twill. This first design that we are going to draw as an example. So हमें पता है कि 3x1 3 plus 1 is equal to 4 and we need 4 peaks and 4 ends for this design. So I'm selecting here 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, and you can also see it here that when you are holding it, you can see the number of rows and columns that you are selecting. So you don't have to count it, you can just see it here, like how many boxes I am selecting. Okay, okay. अब हमने twill weave design draw करनी है in the Z direction. So I am going to write here 3x1 Z twill. This first design that we are going to draw as an example. So हमें पता है कि 3x1 3 plus 1 is equal to 4 and we need 4 peaks and 4 ends for this design. So I'm selecting here 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, and you can also see it here that when you are holding it, you can see the number of rows and columns that you are selecting. So you don't have to count it, you can just see it here, like how many boxes I am selecting. Okay, I have drawn the borders, all borders. Okay, अब हमें इसका ट्राइंगल, अब जबकि हमने ये सीख लिया कि ट्विल वीव को कैसे ड्रॉ करना है इन एस डायरेक्शन एंड सी डायरेक्शन. So अब we are coming towards the classification of the twill weave. First one is according to the direction of the twill lines, which are S are left hand twill and Z are right hand twill, and we already discovered that and learned how to draw them. Second one is according to the face of the yarn. ये हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे प्लेन वीव और उसके डेरिवेटिव्स थे, वो बार्ड फेस भी होते थे, वेब फेस भी होते थे और बैलेंस भी होते थे. इसी तरह ट्विल वीव जो है हमारे पास ये बैलेंस ट्विल वीव भी होती है. इफ इट इज 3x3 इट मीन्स 3 अप्स एंड 3 डाउन्स. तो फैब्रिक की सरफेस के ऊपर हमें बार्ड और वेब की जो अपीयरेंस है वो इक्वल नजर आएगी. और ये अनबैलेंस्ड ट्विल वीव्स भी होती हैं जिसमें बार्ड फेस भी ट्विल वीव भी होती है. फॉर एग्जांपल 4x2 इट मीन्स 4 barb yarns up and 2 times back yarn is up. So barb yarn हमें ज़्यादा नज़र आएगा on the face of the fabric. And similarly web based twill weaves भी होती हैं, जैसे 1/3 इसके अंदर web yarn जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा for 3 times. It means in a single end, तो total fabric की surface के ऊपर web की prominence ज़्यादा होगी. यहाँ पे एक बात वो ये है कि प्लेन weave को फेस से देखें या बैक से, तो हमें दोनों तरफ प्लेन वीव ही नजर आती है. बट ट्विल वीव के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता. ट्विल वीव में अगर आप अनबैलेंस्ड ट्विल वीव बना रहे होंगे, सो फेस के ऊपर अगर हमें 4x2 एस ट्विल नजर आ रही है, तो उसकी बैक के ऊपर हमें 2x4 जी ट्विल नजर आ रही होगी. दो चीजें होती हैं. फर्स्ट वन, जहाँ पे वार्प अप है वो डाउन नजर आते हैं, दूसरी तरफ से बैक टॉप नजर आता है, और जहाँ पे बैक टॉप होता है वहाँ पे दूसरी तरफ से वार्प अप नजर आता है. सो 4x2 will be 2x4 from the back side. And secondly, direction of the twill lines also change. अगर फेस के ऊपर हमारे पास S है तो बैक के ऊपर हमारे पास Z डायरेक्शन नजर आती है. एंड इसी तरह अगर फेस के ऊपर Z डायरेक्शन है तो बैक के ऊपर S डायरेक्शन नजर आएगी. एंड आप लोगों ने इसको कैसे कंफर्म करना है, आप लोगों ने पेपर के साथ
इस पीप्स को स्ट्राइप्स काटनी है उसकी, और इन पीप्स को आप लोगों ने वीव करना है, और फिर उसकी फेस को और बैक को दोनों को देखना है। ट्विल प्रोमिनेंस किस साइड पे होगी, कौन सी वीव हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगी, बार्ब ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा या बैक ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। सो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप ट्विल वीव्स बना रहे हैं जहाँ पे बार्ब प्रोमिनेंसी आपको चाहिए और वो है भी बार्ब बेस्ड ट्विल, सो आपको उसके लिए बार्ब यार्न की प्रोमिनेंस को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए एंड्स पर इंच को पिक्स पर इंच से ज़्यादा रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास ट्विल वेब बेस है और आप वेब को ज़्यादा प्रोमिनेंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको वेब यार्न को के लिए पिक्स पर इंच को ज़्यादा रखना पड़ेगा एंड्स पर इंच से। कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स क्या हैं? First one, Twill Weave requires at least 3 heeled frames. It means कि जो सबसे छोटी Twill Weave बनती है वो 2x1 या 1x2 की है एंड मिनिमम 3 फ्रेम्स होंगे तो हम Twill Weave कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज Twill Weave जो है वो फैब्रिक के ऊपर नहीं बन सकती। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि प्लेन वीव और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स थे वो सब के सब 2 हील्ड फ्रेम्स के ऊपर बन जाते हैं। सेकेंडली ट्विल के अंदर हमारे पास डायगोनल लाइंस बनती हैं और इन डायगोनल लाइंस का एक एंगल होता है जो डिपेंड करता है बार्ब यार्न्स कितने हैं पर इंच के अंदर और वेब यार्न्स कितने हैं पर इंच के अंदर, एंड दिस एंगल वेरीज फ्रॉम 15 डिग्री टू 75 डिग्री। एंड आपकी डेनिम के अंदर 3x1 की ट्विल होती है एंड उसके अंदर एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनता है विच इज आल्सो नोन एज कॉमन ट्विल। एंड द ट्विल लाइंस एंड अगर हमारी ट्विल लाइंस का एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा बनेगा तो हम इसे स्टीप ट्विल कहेंगे, एंड अगर हमारा ये एंगल 45 डिग्री से कम होगा तो हम इसे रिक्लाइनिंग ट्विल कहेंगे। ट्विल वीव फैब्रिक ड्यूरेबल है एंड वर्सटाइल फैब्रिक है that is used for clothing, accessories and home goods or home textiles. So we are going to see them one by one. First one is the denim. अब सारे लोग पहनते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फैब्रिक है। जीन्स मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं, पॉपुलर हैं, एंड इन डेनिम का जो फैब्रिक है वो कॉटन से या कॉटन के ब्लेंड से बनता है। सेकंड वन इज द चिनोज, एंड चिनोज से कॉटन ट्विल फैब्रिक है जिसके अंदर चिनोज या खाकी पैंट्स बनाते हैं। इसके अंदर और जीन्स के अंदर या डेनिम के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि जीन्स जो है वो हैवियर यार्न या कोर्सर यार्न से बनाते हैं, जबकि चिनोज जो है वो लाइट वेट या फाइनर यार्न से बनता है। नेक्स्ट वन इज द ट्वीड, हाउंडस्टूथ एंड द हेरिंगबोन फैब्रिक। ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्विल्स हैं जिसके अंदर हम एस एंड सी ट्विल दोनों को यूज़ करते हैं, और इन फैब्रिक्स के अंदर मोस्टली हमारे पास कलर्ड यार्न्स यूज़ होते हैं और ये फैब्रिक्स शूटिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्किंग क्लॉथ फैब्रिक्स। क्योंकि ट्विल फैब्रिक्स जो हैं इनकी वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है एंड ये ड्यूरेबल भी हैं, सो ये ओवरऑल्स एंड जंप सूट्स के तौर पे हमारे पास यूज़ होते हैं, आउटडोर एंड इंडस्ट्रियल क्लॉथ्स के तौर पे। अपहोल्स्ट्री में ये हमारे पास सोफ़ा, चेयर्स, कुशन्स और कर्टन्स के फैब्रिक्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, और रेपिटेटिव यूज़ के बाद भी कई सालों के ये एज इट इज़ ही रहते हैं। लास्ट वन इज द बेड एंड बाथ लिनन्स। क्योंकि इनके अंदर थ्रेड काउंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड्स पर इंच और वेब पर इंचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि इन्हें सॉफ्टर बनाते हैं। सो अपने इस सॉफ्ट होने की वजह से दे आर यूज्ड इन शीट्स, बेड शीट्स, बेडिंग्स एंड टॉवल्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ द ट्विल वीव, कि हम ट्विल वीव अगर यूज़ करते हैं किसी फैब्रिक के अंदर तो उसका फ़ायदा क्या होता है हमें। सो फर्स्ट वन, दे आर ड्यूरेबल। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों के पास डेनिम है, तो उनको पता है कि डेनिम फैब्रिक लंबे अरसे तक चलता है, हमें से वेयर एंड टेयर इसकी बहुत ही कम है और इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़राब नहीं होती। सो डेट इज़ वाई पॉलिस्ट्री के अंदर भी ये ऐसे यूज़ होता है और गारमेंट्स के अंदर भी ये यूज़ हो सकता है ड्यू टू इस प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूरेबिलिटी।
सेकंड इज ओपेक, क्योंकि ट्विल फैब्रिक्स के अंदर थ्रेड काउंट बहुत ज़्यादा होता है, वार्प पर इंचेस, एंड पर इंचेस एंड पिक्स पर इंचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज़ वाई दे मेक देम ओपेक, एंड दैट इज़ द रीज़न कर्टन्स के लिए और हाउस वेयर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है। थर्ड वन, शो फ्यू स्टेन्स, इट मीन्स कि ये गंदे बहुत कम होते हैं या इनके ऊपर दाग धब्बे जो हैं वो हमें कम नज़र आते हैं। अगेन दैट इज़ द बेस्ट रीज़न ये होम टेक्सटाइल के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर डर्ट जो है वो हाइड हो जाती है, इन दी ट्विल लाइन्स शेड नज़र आता है और उससे डर्ट नज़र नहीं आती है हमें। नेक्स्ट वन इज़ दी प्योर इंकल्स एंड क्रीजेस, इसके अंदर इंकल्स एंड क्रीजेस कम पड़ते हैं, और ये आप लोगों को पता है क्योंकि थिकनेस ऑफ द मटेरियल थिक फैब्रिक है। थिक फैब्रिक होने की वजह से आपको पता है कि डेनिम के अंदर या जीन्स की जो आपकी पैंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास रिंकल्स बहुत ही कम पड़ते हैं या हमें उन्हें प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट वन इज़ द ड्रेप स्टाइल, इनकी जो फॉल है वो भी बहुत अच्छी होती है, और फॉल अच्छी होने की वजह से ही हम इन्हें शीट्स के तौर पर और क्लॉथिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। Okay, so that's all for the today's lecture. Kindly stay at home, stay safe, and please wash your hands regularly. Thank you so very much. Allah Hafiz.